Hello, what's up? Yo, what is up, guys? We are back with another live, and this time we have OBS set up. Uh, I'll just check the setup. Oh, let's go. Wait, cam stuck, cam stuck. कैमरा तो सही है बहनचोद. Let's go, let's go, let's go. Fucking bullshit, भाई. ओके, अब चेक करते हैं. ऑल साइड, आई गेस. यप. के चैट्स में थोड़ी लेटेंसी है, बट आई थिंक इतनी लेटेंसी तो चलेगी. चलो भाई, फाइनली. ओके. So what I'm doing right now is I'm basically setting up an MCP server along with an MCP client in our GAIA. Uh, so our purpose is to make GAIA a MCP host. So let's first of all study about how to make it possible, right? We need to gather some context about making our MCP. Okay, so I'll just share uh, the live stream with my guys, friends. I'll just grab this link, intermission.
Okay, here we are. Mm, okay, so first of all, let's do the official docs. Okay, the overview of the model context protocol discusses its scopes and core concepts. Example demonstrating each core concept because MCP SDKs attract have many concerns. Most developers will likely find data layer protocol section to be most useful. Okay, it discusses how MCP servers can provide context to an AI application. For specific implementation details, please refer to the documentation. Okay. Okay, scope. The model context protocols, like MCP specifications, होता है. The specification of MCP that outlines the implementation requirements for the clients and servers. इसलिए किस होता है development tools होता है reference implementations. Okay, participants. MCP follows client server architecture. Obviously, MCP होता है अपना. Here in this case we have GAIA establishes a connection two or more MCP servers. Okay. The MCP host accomplishes this by creating one MCP client for each MCP server. Okay, okay. Hmm. Each MCP client maintains a dedicated one-to-one connection with its corresponding MCP server. MCP hosts are AI application that coordinates and manages one or multiple clients. Okay. MCP client is our Gaia component that maintains connection to an MCP server and obtains context from MCP server for the MCP host to use. Okay. Visual Studio Code acts as an MCP host when Visual Studio Code establishes a connection to an MCP server, such as let's say a Sentry MCP server. The Visual Studio Code runtime initiates an MCP client object that maintains the connection to Sentry MCP server or local file system server. To Studio Code runtime instantiates an additional MCP client object to maintain this connection. Okay, including lifecycle management. Okay, JSON RPC based protocol client server communication. Data layer क्या होता है? Defines and manages structures and semantics. Tools, resources, prompts. Okay. Allow servers to request language model completions from the client's API AI connection. This is useful when servers authors want access to a language model but want to stay model independent and not include a language model SDK in their MCP server. Elicitation always allows servers to request additional information from users. This is useful when servers authors want to get more information from the user or ask for a confirmation for an action. They can use the elicitation request method to request additional information from the user. Okay, okay, let's start. Initialization, data layer protocol. Okay, initialization कैसे होता है lifecycle management में? MCP begins with lifecycle management through capability negotiation handshake, as described in lifecycle management section. First of all, client sends an initialize request to establish the connection and negotiate supported features. Okay, so the initializer required by capabilities is elicitation and client info. The response that we get is protocol version and capabilities are tools like list changed. The initial process is a key part of MCP lifecycle management. Serves critical purpose. Protocol version negotiation.
The protocol version, example, field, compatible protocol versions, okay. Capability discovery, the capability objects allows each party to declare what features they support. Tools and whether they support features like notification, identity exchange. Okay, client capabilities is elicitation, declares it work with user interaction requests. Server capabilities, server supports the tool primitive, can send tool slash list change notification when the tool is okay, tool list changes. Okay, how this works is any application during installation, the A application's MCP client manager establishes connection to configured server and stores the capability for later use. The application uses the information to determine which server can provide specific types of functionality, whether they support real-time updates. Redirect with a sync client session as session, session not initialize. If capabilities.tools, then app.register MCP server as session is supports tool equals to true. Okay. Set server ready session. Okay. Now that the connection is established, the client can discover available tools by setting a tool slash list request. The request is fundamental to MCP's tool discovery mechanism. It allows clients to understand what tools are available on the server before attempting to use them. Okay, fair enough. Okay, calculator arithmetic. Input time is object, string, mathematical expression to evaluate. Okay, required expression. Okay, weather current. Okay, this is the two tools that we can pass to LLMs that LLM can dynamically call for more context. This array-based structure allows servers to expose multiple tools simultaneously. Hmm. Okay, name is a unique identifier. Title is human readable display for the tool. Description is detailed explanation of the tool does and when to use it. Okay, this is important for the LLM. An input schema, JSON schema that defines the expected input parameters, enabling type validation and providing clear documentation about required and optional parameters. How this works in AI applications, the application fetches the available tools from the connected MCP servers and combines them into a unified tool registry that the language model can access. This allows the LLM to understand what actions it can perform and automatically generates the appropriate tool call during conversations. Okay. Available tool is this thing. Per session in MCP server sessions. Okay. We'll basically iterate through all the server sessions that our clients are connected with and will session.list tools means we'll fetch all the tools available from all the different servers and will basically append into the available tools and then conversion.register available tools. Okay. And then tool execution. The client can now execute a tool using the tool slash call method. This demonstrates how MCP primitives are used in practice. Okay. After discovering available tools, the client can invoke them with appropriate arguments. Understanding the tool execution request. The tool slash call request follows a structured format that ensures type safety, clear communication, proper tool name, discovery name. Okay. Okay, tool call request. Let's say one of our client calls this tool because of invocation through LLM. Weather name, arguments is location, and units is empirical. This is the weather in San Francisco. The key element of tool execution is name, arguments, JSON RPC structure with unique ID for request response correlation. Wait, did we miss the ID? Okay, this thing. Oh, okay.
Oh, because there will be multiple IDs, na? Let's say there are multiple concurrent requests that are made. So client need to bifurcate between those concurrent requests. So we need to pass a unique identifier to obviously know what response correlate with what previously made request. Okay, understand tool execution process. Response. Content array is a tool for response return an array of content objects. Content types. Each content object has a type field. In this example, structure output. The response provides actionable information that AI application can use. Okay. How this works in AI applications: when the language model decides to use a tool during a conversation, the AI application intercepts the tool call, routes it to the appropriate MCP server, executes it, and returns the results back to the LLM as a part of conversation flow. This enables the LLM to access real-time data and perform actions in real world. A pseudocode for application, tool call execution. Okay. Handle tool call, conversation, tool name and arguments. App.find MCP session for tool. Await session.call.tool and tool name and arguments. Okay. Conversation.add tool result. Oh, real-time update notification. MCP supports real-time notification that enables server to inform clients about changes without being explicitly requested. This demonstrates the notification system, a key feature that keeps MCP's connection synchronized and responsive. Understanding tool list change notification. When the server available tools change, such as a new functionality becomes available, the existing tools are modified or tools become temporarily available. Obviously, the server can proactively notify the connected clients. Key feature of MCP notification: no response required. ID field communication because it's allowed notification acting with no response is expected or sent. The notification is only sent by servers that declared list change true in their capabilities during initialization. Okay. Event driven, the server decides when to send notification based on initial state changes. Okay, when client receive notification of tools being changed, obviously we'll have to fetch all the available new tools again with a proper ID. Why notification matter dynamic environments? Yeah, we know how this works in any application. Receives a notification about tool change, it immediately refreshes its tool registry and updates the LLM's available capabilities. This ensures ongoing conversation always have access to the most current set of tools. Yep, yep. Okay, this is the basic architecture. Now we'll deep dive into servers.
So basically, we need to prepare our own server. If is it possible to like connect with a already pre-built server, it will be great for our use. I mean, it will be helpful for and reduce a lot of development effort. Hello, 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 man, chod. Hello, 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 hello. Hi, hello, hello. Fucking hello. Fucking bullshit. Hello. Okay, so let's test. It seems like we are in a good spot.
Okay, let's jump back to our work. hmm Specification will be okay. So like we'll allow okay, okay. Let's know how like servers are to be understanding the MCP servers. MCP servers are programs that expose MC specific capabilities to applications. Okay, yeah, we know. So basically, wait. So what is our task of MCP server is like to provide context to our client, right? It could be like a file system to retrieve your files, but it won't work for Gaia because Gaia is a web-based application. It might work for VS Code or Cloud Desktop. So basically, there is no need to set up a file system server for document access in a Gaia. Database servers will be also, I guess, not useful because we are already integrated with it, Compose U and Mem0, which will provide it a memory graph. Slack would be interesting. Okay, Slack could be done. Slack servers for team communication. Okay, functionality of three blocks. Okay, tools, resources, and prompts. Functions that your LLM can actively call and decide when to use them based on your user's requests. Tools can write to databases, call external APIs. Okay. Resources obviously static contents or files or schemas. Prompts seems like interesting. Pre-built instruction templates that tell the model to work with specific tools and resources. Okay. Example search flights and messages create calendars. Who controls it? Model. Tools. Yeah, model controls it when to call. Application controls retrieve documents, access knowledge, bases, read calendars. And user controls prompts. Plan vacation summarizes by meeting, draft an email. Hmm. Okay, okay. Let's ask an LLM how to approach our desired product, right? Like right now we have learned what MCP is, what its architecture is, how servers are built, how clients are built. But now, like, I'm a bit confused. Like, am I supposed to like build entire, let's say, Slack, Obsidian, Slack, GitHub servers completely by me myself, or are there pre-built? Yeah, there must be pre-built servers now. There might be pre-built clients as well. Who knows? Hi Gaia, sorry, hi ChatGPT. I'm making my AI agentic startup MCP host now, so I'm a bit confused. Do I need to make entire MCP servers and entire MCP clients one-to-one corresponding correlation by myself, or are there pre-built MCP servers and clients that I already out there in remote repositories that I can use for plug and play? Okay, enough.
उधर भाई आजा नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा भाई संकल्प? आ गया ना? दिख रहा है? प्ले म्यूजिक, गाने। भाई कॉपीराइट स्ट्राइक दिलवाएगा। और वैसे भी मैंने डेस्कटॉप ऑडियो बंद कर रखा है। गुड गुड। नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? कॉपीराइट स्ट्राइक? अच्छा मेरी वीडियो देखेगा ही कौन जो कॉपीराइट स्ट्राइक डालेगा, है ना? पियान के लन। वेट बताता हूँ मैं। नहीं आएगा। सीधे मौत का लगा। ये कहाँ से लगाया? चैट बॉट ट्रिक्स करके एक था। वो तेरे को यूट्यूब चैट, ट्विच चैट, इवन तू मल्टी चैट ये कर सकता है कि लाइक तू एक साथ 3 जगह स्ट्रीम कर रहा है, किक पे, स्लैक पे, ट्विटर, ट्विच पे और यूट्यूब पे। तो तेरे को यहाँ पे आइकन भी दिखेगी कौन से प्लेटफॉर्म में किसने मैसेज किया। तो क्रेजी। अभी तो फिलहाल मैंने ट्विच ने इंटीग्रेट किया है, अभी तो फिलहाल यूट्यूब चल रहा है। ये सारे टॉक ओके सही टॉक है। इसम करे नॉक नॉक बंदे क्या खाते कर रहा था अभी अब कॉफ तक? कॉफ एनर्जी दे ऑफ ऑफ हम करे बॉस जॉब सीईओ है टॉप नॉच 36 14 पाले लेकिन पाले नहीं कोई लॉस कॉज वो उसका लॉस लॉस कहती चलता सिक्का वो बस हो रही है टॉस टॉस वो उसका लॉस लॉस पहले दिखता नहीं था खासा भाई पे पैसा इंटरनेट बहुत बहुत स्लो है बहुत तेरा, लैग बहुत हो रहा है। सही में इतना लैग हो रहा है क्या? बनते पॉप पॉप हो गई बंदी शौक शौक है पैसे के लिए 100 फोन जब दिख गया मनी कॉलिंग दिखी मेरे पीछे भक्ति फौरन हाथ में जब देखे नहीं वो सही है। रोली जॉर्डन तेरा हाथ इंटरनेट को गलत कोई होगा बे, मैंने बेबी इनफैक्ट बाउंड्री चेक भी करी किया के है, सही डॉग है मेरी मेरा। बातें बहुत कम पाड़ी भाई बंदी के साथ जाए डाउन जब आके टिकी क्राउन पे तो बाकी शेडे साइड पे वो आगे वेट देखे दिखाता क्राउन हूँ। नॉट चाहती जाना ऑल इन टॉस वो उसका लॉस लॉस पहले दिखता नहीं था खासा भाई पे पैसा इंटरनेट बहुत बहुत स्लो है बहुत तेरा, बहुत लैग बहुत हो रहा बड़े है। शौक सही में इतना शौक लैग हो रहा है गाने क्या? बनते पॉप पॉप हो गई बंदी लैग शौक तो हो रहा शौक है। है वो बस हो रही है टॉस टॉस वो उसका लॉस लॉस पहले दिखता नहीं था खासा भाई पे पैसा बहुत बहुत रखू बड़े शौक शौक गाने बनते पॉप पॉप हो गई बंदी ओके। शौक शौक है पैसे के लिए ऑप्शन 100 कस्टम फोन जीपी डॉट जब ए दिख गया होस्टेड एमसीपी मनी सर्वर फॉर कॉलिंग रैक दिखी मेरे पावर्ड पीछे एजेंट्स भक्ति फौरन और हाथ the में जब provide देखे वो strengths fully रोली managed जॉर्डन MCP हाथ जो endpoints करू to गए बेली to बाउंडन connect करी data के टॉप sources, मेरी PDFs, बातें Notion, बहुत कम Drive, पाड़ी भाई Amplify, बंदी के MCP साथ जाए server डाउन via जब आके टिकी UI, क्राउन पे तो बाकी शेडे साइड पे वो आगे देखे get क्राउन नॉट endpoint चाहती plus जाना ऑल इन ऑल कसम पॉपिंग शोके बादू एफएल पे नॉट फॉलिंग फॉर इट शोके बादू साथ अगर तू बहुत इंपॉर्टेंट को नहीं सीधे मुझसे ऊपर है कॉमन नॉलेज इनके लिए प्रॉब्लम कौन है तेरे भाई दो लोगों का से नॉर्मल बॉनेट पे है 2 साल हो रखा है होश और फोन का एक शो है कोने का ने मूव लाइक okay. सोने का एक एल्बम क्रॉनिक पे फैल मत तोड़े मुझे देखा था साइफर में तो हाथ पैर जोड़े आते गुदान में जैसे ये लोग शेयर वेयर छोड़े इन्हें चाहिए नहीं कि कोई इनके पैर वैर तोड़े एक बंदी है आरी बहुत पसंद पर पता नहीं इफ आई हैव टाइम फॉर दैट शिट बच्चा था 11 तक ग्रीन डे में स्कूल में आई न्यू आई वाज मेड फॉर दैट स्टेज और कुछ साथ बात कर रहा था रोडों पे रैप अपन रोडों पे चलूं तो सीन बंदे ये बोले बहुत जाने ये अंदर कौन बेस्ट इन द ब्रेस ये सारे टॉक टॉक इसम करे नॉक नॉक बंदे खाते कॉफ कॉफ एनर्जी दे ऑफ ऑफ हम करे बॉस जॉब सीईओ है टॉप नॉच 36 14 पाले लेकिन पाले नहीं कोई लॉस कॉज वो उसका लॉस लॉस कहती चलता सिक्का वो बस हो रही है टॉस टॉस वो उसका लॉस बहुत हो रहा लॉस है, कोई पहले नहीं। दिखता नहीं चालू था रख। खासा भाई पे पैसा बहुत बहुत भाई लैग इतना हो रहा है क्या भाई? मेरा पैसा शानदार लगे जो भाई इतना लैग तो नहीं होना चाहिए। ब्रो स्ट्रीम बंद हो गई क्या मेरी? जो स्ट्रीम क्यों बंद हो गई? hosted MCP server for rack powered agents
Auto provides strengths, fully manage MCP endpoints to connect data sources, PDFs, Notion, private device प्रोफाइल भी चेंज server कर via UI, ठीक है भाई करता हूँ प्रोफाइल चेंज get endpoint plus हाँ बहनचोद यार बहुत लैग कर रहा है यार डिले कर रहा है ना एकदम बहुत ज्यादा क्या करूँ भाई रिस्टार्ट कैसे करें इसको बफर को ऐसा क्यों कर रहा है किस्मत पहचान चार जो मिला मुझे रैप दी जान डाल अब आता उनके पास छुआ छूट घूमे बाएं हाथ तेरी छुआ थूट जाके अपने गानों में बोला छूट कैमरे में बनते ईमानदार हाँ जी दिल्ली हस्तिनापुर से कम नहीं हम दो नौशू और मोसाद घंटी न्यू एज पांडव है हम पांच सची भीमू लिखता तो हिलती धरती कुछ नए बाल का रैप में भर्ती आर्टिस्ट बैक मैंने आर्ट की वर्दी हमें तेरे हेट इन्हें फेम की जल्दी इन्हें सगा भाई दे तो उससे जल्दी ओए ओए गानों में रो जाए ओए ओए सोचे हैं गोट करे मैं हुई तेरी फिस करे टैं टैं भाइयों का भाई I'm the man वो रह रहा है नोएडा में गान फटी में डालता नहीं स्टोरी है छुपा रहा लोकेशन पर बच नहीं पाएगा इस जिंदगी में तेरे लोग पूरी खरीदा था पहला चीरा आजा तेरे मुंह पे निशान दो फ्री में मांग रहे हैं जल लेकिन जल के राख है मैं जल के भी फैलू क्योंकि आग में घी है सीधे मौत जल और जीवन दोनों गाने वाले ने चले ले मिस्टर ई से मोटा पैसा छाप रहे हैं लेफ्ट और राइट से 20 लाख टैक्स सरकार को फीस दे बिच ये सारे टॉक एसएम करे नॉक बंदे खाते खौफ एनर्जी दे ऑफ हम करे बॉस जॉब सीईओ है टॉप नॉच 36 14 पाले लेकिन पाले नहीं कोई लॉस कॉज वो भाई पे पैसा बहुत लैग इतना हो रहा है क्या भाई मेरा पैसा शानदार लगे जो भाई इतना लैग तो नहीं होना चाहिए ब्रो स्ट्रीम बंद हो गई क्या मेरी जो स्ट्रीम क्यों बंद हो गई pair hosted MCP server for rack Boii. Auto provides strengths, fully manage MCP endpoints to connect data sources, PDFs, Notion, private device प्रोफाइल भी चेंज server कर via UI, ठीक है भाई करता हूँ प्रोफाइल चेंज get endpoint plus हाँ बहनचोद यार बहुत लैग कर रहा है यार डिले कर रहा है ना एकदम बहुत ज्यादा क्या करूँ ओके मैं नोटिस किया मैंने रिस्टार्ट कैसे करें इसको बफर को लाइक मैं जब भी ओबीएस में जाता हूँ तब लैग करता है ऐसा क्यों कर रहा है किस्मत पहचान चार जो मिला मुझे रैप दी जान डाल अब आता उनके पास छुआ